welcome all of you in our science class. Today we will study the chapter Human Respiratory System. Basically, generally the human body consists of some systems, that is nothing but the first one respiratory system, second one is the circulatory system, third one is the digestive system, and fourth one is nothing but the excretory system. And all of those systems today we will study mainly the human respiratory system. Okay, before going to this chapter, we must know some definitions, some concepts related to that point or related to that system. Okay, the main two definitions included in that chapter. Mainly, first one is the breathing and second one is the respiration. Breathing and respiration. Breathing is the process in which inhalation and exhalation takes place. It means breathing is the process in which inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide takes place, and that is nothing but the breathing. But in case of the respiration, the breakdown of food takes place and release in the energy. That is the main difference between the breathing and the respiration. Respiration is also called as the cellular respiration. Then question arises, why it is called as the cellular respiration? Because the respiration takes place in the whole cells. Okay, and breathing is nothing but only inhalation and exhalation takes place in the breathing process. But in respiration, cells are used for the whole process of the respiration. So respiration is also called as the cellular respiration, in which that respiration takes place, the reaction, that is the oxygen, is when combines with the glucose to release energy or to form the ATP, that is adenosine triphosphate, and that is nothing but the energy. Hence, simply we can given as the reaction as oxygen when combines with the glucose, it forms the ATP molecules or ATP or energy, that is adenosine triphosphate. This is the simple reaction. In this chapter, in this portion, we are going to study basically 2 points. That is, first one is the structure of the respiratory system, and second one is the exchange of the gases takes place in the human respiratory system. So let's study the human respiratory system. Basically, human respiratory system consists of some parts. It starts from, means human respiratory system starts from the nostrils and ends with the alveoli. Okay, now let's study the human respiratory system. The human respiratory system starts from the nostrils and ends with the alveoli. So step by step we will study that all the steps which involves in the human respiratory system. Okay, come to our point. For your any theoretical exams, for your any theoretical papers, or as well as the any state board exams also, this chapter is very essential, very helpful and important. So this diagrams is very easy, and any exam requires the diagrams with the labeling. Then when oxygen comes from the atmosphere, it is inhaled by the nostril, and then it goes towards the next portion, that is nothing but the portion that is the pharynx. Okay, this whole portion means nasal chamber and nostrils, then your mouth region and nose region comes into the pharynx region. Hence this whole portion is the pharynx region. Then when air comes into the nostrils and goes forward in the downward direction, that is nothing but the pharynx, first one, and then goes to the larynx. This portion is called as the larynx. This air comes to with the larynx, and next it goes to the, this pipe-like structure is known as the trachea, and then it goes to the lungs portion, that is the left lung and right lung, and lastly it goes to the alveoli. Okay, this is generally the process for the
respiration, how air uh, comes from the atmosphere and ends to the or goes to the last portion of the human respiratory system, that is nothing but the alveoli. Humans inhale the oxygen from the atmosphere with the help of this nostril. In nostrils, small hairs are present. What is that function and why there is a necessity of the hair in nostrils? So that hairs or those hairs uh, are present for absorption of the dust particles from the oxygen from the atmosphere. Then many germs or many dust particles absorbs in our body or inhale in our body. Then this hair-like structure or hairs are absorbed. Hairs absorbs the dust particle, as well as nostrils has the nasal passage in which mucus and hair, okay, mucus and hair are present. That mucus is the mucus absorbs the dust particles as well as the germs. Okay, these hairs in nostrils absorbs only the dust particle, but the mucus has the function to absorb the dust as well as the germs comes from the atmosphere. So it makes the hair humidify the hair. Okay, the mucus function is to humidify the. Now air comes from the atmosphere, goes to this next portion of the human respiratory system, that is nothing but the pharynx. Okay, pharynx, and then to the trachea. This portion, pipe like structure present in the human respiratory system is the trachea. That trachea is also called as the windpipe. And the next one is the this is the esophagus. Okay, the next portion beside to that trachea present in human respiratory system, which is nothing but the esophagus, or it is also called as the food pipe. कि ट्रकिया को हम विंड पाइप कहते हैं. इसका पर्पस यही होता है कि जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ये ट्रकिया के थ्रू अब हमारे लंग्स में चला जाए. और जो इसोफेगस है इसको बोला जाता है कि फूड पाइप, यानी कि जब हम फूड खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड हमारे इसोफेगस के थ्रू ही डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा वो प्रोसीड हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पूरी डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है. तो इसकी ज़रूरत यही है क्योंकि जो यहाँ से एयर आएगी वो ट्रकिया के थ्रू लंग्स में हमारे पास हो जाएगी, और जो फूड होगा वो फूड ये इसोफेगस के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा चला जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कई बार मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए नेचुरली एक फ्लैप लाइक पोजिशन, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दैट दी ट्रकिया. सो दैट पोर्शन इज नोन एज द epiglottis. Okay, these two rings present on the opening of the trachea and the esophagus respectively. So the opening of the trachea is called as the glottis, and opening of the esophagus is called as the clutter. Okay, and this glottis have the flap like position or flap like structure present in its above portion, and that is nothing but the epiglottis. Then question arises, why there is a necessity of epiglottis, or why it is present in the respiratory system. तो ये epiglottis क्या करता है, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो epiglottis यहाँ पे जो ग्लॉटिस का पोर्शन है वहाँ से वो फूड हमारा नीचे नहीं आने देता, यानी कि ट्रकिया में वो फूड नहीं आने देता. इसीलिए यहाँ पे वो प्रिवेंट कर देता है फूड को आने के लिए ट्रकिया में. ओके, तो ऑटोमेटिकली वो फूड कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस में. इसलिए बोला जाता है कि खाते समय अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रकिया का जो ये पोर्शन होगा ग्लॉटिस का, वो या फिर एपिग्लॉटिस का वो ओपन रहेगा और वो खाना जो है यहाँ में ट्रकिया में चला जा सकता है. इसीलिए बोला जाता है कि कभी कभी बोला जाता है कि हमें खाते समय अगर हिचकी आई तो किसने याद किया. वो हिचकी आना और याद करना वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न यही है
कि यहाँ पे अगर हमारा ट्रकिया ओपन होगा तो ग्लॉटिस ओपन होगे, एपिग्लॉटिस ओपन होगी, तो वो खाना है जो हमारे ट्रकिया में जा सकता है और हमें हिचकी आ सकती है। लेकिन अगर हमारा ये ट्रकिया का जो ओपनिंग है वो जो अगर क्लोज रहेगा तो ग्लॉटिस भी क्लोज रहेगा और एपिग्लॉटिस भी क्लोज रहेगा, तो यहाँ से जो खाना आ जाएगा माउथ से वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, हमारे फूड पाइप में। यानी हम यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है ये ट्रकिया का पोर्शन जो है ये थोड़ा इलोंगेट कर दिया है ताकि हम उसकी पूरी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से पढ़ पाए। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे तब हम ये जो फूड पाइप है इसको इलोंगेट करके वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रकिया का ये पूरा पोर्शन, ठीक है। देन दिस ट्रकिया हैज़ द cartilaginous rings are present in it. Okay, here we separately draw this diagram. Trachea. This is the structure. This is the structure of the trachea, and these are the C-shaped rings are present in that trachea. Why there is a necessity of the C-shaped cartilaginous rings present in that whole trachea? Okay, for that we have to give the one examples. Okay, ये अगर सपोज ये हमारा ट्रकिया है, ओके ये हमारा ट्रकिया है, तो यहाँ पे जो पोर्शन है ये सी शेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट ट्रकिया। क्यों ये सी शेप्ड रिंग्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? तो जो ट्रकिया है वो हमारा कोलैप्स ना हो जाए, ओके ट्रकिया हमारा कोलैप्स ना हो जाए इसलिए ये पूरा ये बांध के रखता है, सी शेप्ड जो रिंग्स है वो पकड़ के रखता है ताकि ये ट्रकिया हमारा जो है कोलैप्स ना हो पाए। और आपने ये भी सीखा होगा, इसके आप प्रीवियस ईयर्स में या फिर आज तक के आपने क्लास में सीखा भी होगा कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक होती है, ओके ये ऐसी यहाँ से हमारा खाना पूरा जो है यहाँ से नीचे जा जाता है। जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस चालू होगी तब ये ट्रकिया जो है वो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसा होता है, तो ट्रकिया कोलैप्स ना हो जाए इसलिए वो सी शेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट ट्रकिया। तो यहाँ पे पूरा जो है वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स वो बैक साइड पे प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ये जैसा ट्रकिया है तो ये सी शेप्ड रिंग्स ये एंटीरियर पोर्शन पे फ्रंट रीजन पे फ्रंट पोर्शन पे ट्रकिया के प्रेजेंट होते हैं। अगर बैक साइड पे सी रिंग प्रेजेंट होते तो मे बी ट्रकिया ये कोलैप्स हो सकता था, इसलिए जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो ट्रकिया की एंटीरियर पोजीशन पे फ्रंट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। Next portion is the larynx, that is nothing but the voice box. Larynx is also called as the voice box. तो यहाँ पे हमारे जो मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट वॉइस ऑब्जर्व होते हैं वो किस वजह से, तो यहाँ पे हमारे जो कुछ हार्मोन्स है इन मेल्स एंड फीमेल्स उसकी वजह से जो होता है ये वॉइस बॉक्स, ओके ये वॉइस बॉक्स में अलग अलग आवाज़ आ जाती है, मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट आवाज़ होती है, ओके। Then this larynx goes to the trachea, and next portion is the larynx. Larynx is splits into the bronchi. Here mention the bronchi. Okay, this trachea